Hey guys, welcome to Esporte. It's been a long time. बहुत time से video निकाला नहीं, but I guess I'll be doing it on a very frequent basis. I hope you all missed me. If not, वो भी चलता है. Coming to today's video, we'll be talking about cricket. Cricket, yes, we are known as a country which is mad for cricket. Cricket तो हमारे लिए एक religion जैसा है. And why not? Cricket ने हमें बहुत सारे memories दिए हैं. 1983 World Cup से लेकर 2011 की World Cup. We have a National Trophy win. We have many Test series victories, home and overseas. T20 triumphs. 2007 का World Cup, 1985 का World Championship. तो क्रिकेट तो सबके दिल में बसा ही है. एंड कमिंग टू क्रिकेट, वी कम टू ओडीआईज. आज ओडीआईज की बात करेंगे. तो जैसे पूरे क्रिकेट ने हमें मेमोरीज दी है, ओडीआईज हैज गिवन अ लॉट ऑफ मेमोरीज, लॉट ऑफ मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बैटिंग एंड बॉलिंग. And today I'll be talking about a batting innings. Today I'll be talking about that innings which I feel is one of the greatest ODI innings ever played by an Indian. Greatest ODI innings की बात करें तो सबके मन में तो बहुत सारे नाम आते हैं. 264 रोहित फैंस के लिए तो भाई हिटमैन का 264 ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है. समथिंग विच इज अनब्रेकेबल. यस, दैट इज वन इनिंग्स ओवर देयर. बट सबको लगता है क्या जो पहला आदमी है जिसने 200 मारा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, राइट? सचिन तेंदुलकर, द गॉड, फाइनली रीचिंग दैट बैरियर ऑफ 200. सो दैट इज वन थिंग. सहवाग पाजी ने भी मारा था 200. एंड देन यू हैव द 183 स्कोर्स, द कॉमन स्कोर. वी हैव आवर थ्री फॉर्मर कैप्टन्स, कोहली, गांगुली एंड धोनी. तीनों ने 183 बनाया था. And do not forget our women cricketers. We had Harman and Deepti scoring 171 against Australia in a World Cup semi-final, and Deepti Sharma got 188. So lot of scores, lot of innings, great innings. These are all highest scores, but we have a lot of all innings. But for me, the greatest ODI innings will always be Kapil Paji's 175 or 138 balls at Turnbridge Wells, June 18, 1983, in a World Cup match. Greatest ODI innings ever played by an Indian will always be Kapil Paji's 175. For me, 175 not out, and I have 5 good reasons to back it up. Reason number 1, do or die situation. 1983 वर्ल्ड कप में ना दो ग्रुप्स थे. एक ग्रुप में इंडिया, तो इंडिया के ग्रुप में इंडिया, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज. तो जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया फर्स्ट मैच में. फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज लॉस्ट अ वर्ल्ड कप मैच एंड दैट वाज बाय अगेंस्ट इंडिया. एंड इंडिया वेंट टू विन द नेक्स्ट मैच आल्सो अगेंस्ट जिम्बाब्वे. तो इंडिया वाज इन गुड फॉर्म. सडनली थोड़ा डिप हो गया वहाँ पे. दे लॉस्ट थर्ड एंड फोर्थ मैच व्हिच वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज. सो जब पांचवा मैच था वाज अ वेरी क्रूशियल मैच and they had to win this match because otherwise the last match which would be against Australia was एक dead rubber हो जाता है and India would be flying back home. So this was a very crucial, a really do or die match for India to stay alive in the 1983 World Cup. Reason number 2, top order collapse. भाई अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है ना एक वर्ल्ड कप मैच में, स्पेशली यू ऑलरेडी ऑन योर बैक फुट, तो वहां पे स्कोरिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इंडिया हैड एक्चुअली वन द टॉस and chose to bat, and that decision turned bad because Zimbabwean bowlers they bamboozled Indian batters and they lost both their openers for ducks, and it was 6 for 3 और फिर बने 9 for 4. 9 for 4 पे आ गए कपिल पाजी. कपिल पाजी entered the ground, I mean the pitch, and but 9 for 4 soon turned into 17 for 5. Now India was in dire straits because half the team was already sitting back in the pavilion. उस जमाने में ना जब फॉलो विकेट्स होते थे तो ओवर्स वे नॉट रिकॉर्डेड. सो वी गेस व्हेन इट वाज 9 for 4 कपिल पाजी एंटर्ड द ग्राउंड एट 7 for अराउंड द 7th or 8th ओवर. और अभी 60 ओवर का मैच बाकी था यार, और मोर देन 50 ओवर्स टू बी रेडी टू बी प्लेड. एंड आफ्टर 17 for 5 ही वाज मोर इनटू एंकरिंग द इनिंग. एंकरिंग कर लिए तो स्कोर बना लिए, स्टेबलाइज कर लिए विद हिज 6th, 7th एंड 8th विकेट पार्टनरशिप. और जब पार्टनरशिप हुआ 140 for 8, तब आए सैयद किरमानी. एंड सैयद किरमानी इज सपोज टू बी अ टेल एंडर बैटर, वेरी स्पेशलिस्ट विकेट कीपर. But they stitched a very beautiful partnership of 126 runs for the 9th wicket. इस partnership में ना किरमानी भाई ने ना 24 रन बनाए. So almost 100 runs has been scored by Kapil Dev. Kapil Dev scored a bulk of his runs with the 8th and 9th wicket batsman, and he remained not out, and India posted 266 for 8 in that match finally. रीजन नंबर 3, मैं तो बोलता ही हूँ कि 175 कपिल देव का इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स एवर प्लेड बाय एन इंडियन. बट मेरे बोलने से क्या होता है, बाकी लोग भी बोलते हैं. इफ यू आस्क एनी मेंबर्स फ्रॉम दैट 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम और फ्रॉम द मैनेजमेंट या फ्रॉम द टीम्स, द अदर टीम्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, ऑल द अदर टीम मेंबर्स, दे विल ऑल टेल यू दैट दिस इज अ वेरी क्रूशियल इनिंग्स. बिकॉज अगर ये इनिंग्स नहीं होता तो इंडिया एनीवेज वुड हैव लॉस्ट द मैच. So this innings turned out to be a turning point for the match, turning point, a confidence booster for India in the World Cup, as well as winning the World Cup, and it turned out to be a great
great chapter in the history of Indian cricket, and then there was no turning back for Indian cricket. अगर वर्ल्ड कप नहीं जीतते थे, अगर ये इनिंग्स नहीं होता, maybe we wouldn't have seen cricket as it is right now. Reason number 4, उस जमाने में ना कोई ज़्यादा सिक्स मारता नहीं था, and to score hit a lot of sixes was a very big achievement. Even 1 6. Imagine Navjot Singh Sidhu scored hit 38 sixes in his Test career, and he was given a nickname of Sixer Sidhu. That means sixes was very rare in cricket, even in ODI cricket. अगर उस मैच की स्कोर कार्ड देखेंगे आप तो 21 लोगों ने बैटिंग किया था अमंग द टू टीम्स, एंड 6 सिक्सेस वर हिटन इन दैट मैच. 21 लोग, क्योंकि बलविंदर सिंह संधू ने बैटिंग नहीं किया था, ही डिडंट गेट हिज चांस, कोई आउट ही नहीं हुआ लास्ट में. And 21 people batted, and there were 6 sixes hit in that innings. And the only person to hit that innings was Kapil Baji. भाई लंबे लंबे मार रहे थे वो, and it was an enormous achievement not to hit a 1 6 2 6 but 6 sixes. आधा डजन सिक्स मार दिया कपिल बाजी ने अकेले वो मैच में. रीजन नंबर 5, ऑल्सो रीजन नंबर 4 तो मुझे वैसे ही पसंद था, बिकॉज 6 6 कौन मारता था यार 1983 में. बट रीजन नंबर 5 हैज टू बी द बेस्ट. This was the first ODI century by an Indian. So India का डेब्यू हुआ ODIs में 1974 में, and by the time they reached 1983, they had played around 40 ODIs, and उस दौरान around 35-40 people played ODI cricket for India. So still in 9 years, around 40 players playing, not a single of them breached the 3-digit mark. And Kapil Baji was the first person to do that in a World Cup game. और उसने 101, 102, 110 नहीं 175 मारा, वो भी not out. So this definitely is one of the best reason, and I would say the greatest and my favorite reason, that this innings has to be the greatest ODI innings ever. Unfortunately, BBC won strike, and this match was never covered by anyone or even a local broadcaster, and it always remains as something inscribed in cricket in history as a tale or a legend, something जो we hear a lot, and unfortunately we cannot see it, we cannot relive it again. अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई 175 out of 138 in a World Cup match in a do or die situation, coming at 17 for 5, hitting the first ODI century for an Indian, hitting 6 sixes, which is the most in a match, no one has even hit one, is still not the greatest ODI innings ever, then please tell me which is, and वो comment section में लिख देना, and preferably with 5 important points and crucial points, I would say, and maybe I'll try to make a video on that innings. In the meantime, keep liking, keep sharing, and subscribe to my channel if you haven't. And thanks for watching Esporte Savvy. We'll be back with more such videos, or I'll be back with more such videos in the near future. And this time it won't be such a big gap. Thanks for watching. It's always Sports Savvy.